Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे। उद्यन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। वेलकम उद्यन। थैंक यू राजेश। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश। At the stock market, Sensex gains 177 points to close at a fresh all-time high. Nifty adds 55 points to a new record high. RBI announces the launch of the first pilot for the digital rupee on December 1. And the rise of India is deeply linked with the rise of Indian technology, says External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 177 अंक के उछाल से अब तक के उच्चतम स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 55 अंक बढ़कर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपए की शुरुआत की घोषणा की और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत की उन्नति और देश की प्रौद्योगिकी में प्रगति के बीच गहरा संबंध। शुरुआत शेयर बाजार से। घरेलू शेयर बाजारों में आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.3% की वृद्धि से 177 अंक चढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 62,682 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 55 अंक बढ़कर 18,618 पर पहुंच गया। लेकिन व्यापक बाजार का प्रदर्शन सेंसेक्स से कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई। As the stock markets rising for the sixth straight day, the Sensex at the Bombay Stock Exchange gained 177 points or 0.3% to close at a fresh all-time high of 62,682 today. The Nifty at the National Stock Exchange added 55 points to a new record high of 18,618. But the broader market underperformed the Sensex, with the BSE Mid-Cap Index falling 0.4% and the Small Cap Index shedding 0.3%. Among the sectoral indices, the FMCG Index was the leading gainer, climbing 1.7%. The Metal and the Consumer Durable Index rose 0.6% each. The Healthcare Index gained 0.5%. Among the declining indices, the Telecom Index dropped 1%. The Industrials and the Capital Goods Index slipped 0.7% each. The Realty and the Services Index shed 0.4% and the Auto Index ended 0.3% lower. Among stocks, Hindustan Unilever surged over 4%. JSW Steel and Cipla were the other prominent gainers, but Bajaj Finserv, Coal India and IndusInd Bank shed over 1% each and dragged the market. उद्यन, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुआ है शेयर बाजार, खासतौर पर सेंसेक्स, और आज तो निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। क्या ट्रिगर्स आप देख रहे हैं इस तेजी के पीछे? देखिए, इसमें भारतीय मार्केट और भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में तारीफ किए बगैर कोई रह नहीं सकता, क्योंकि आप देख लीजिए अमेरिकी मार्केट, यूएस मार्केट्स जो हैं वहां पे कल गिरावट रही थी, प्रेशर में थे। दूसरे कई मार्केट्स भी दबाव में थे, पर भारत अपना वर्चस्व, अपना जो वजूद बना के बैठा हुआ है एंड न्यू हाइज में जा रहे हैं।
और इसमें काफी कुछ रोल जो है विदेशी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसमें रिटेल आप और हम जैसे निवेशक जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से निवेश करते हैं चाहे वो म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू उनका एक रोल बन रहा है और वो कांस्टेंट जो फ्लो मार्केट में जा रहा है उसके वजह से एक सपोर्ट और अप मूव में मदद। इसके अलावा कई कंपनीज हैं जहां से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं जो बड़ी कंपनियां हैं। आप देखेंगे कि बाकी दूसरे जो इंडेक्सेस हैं वो उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया मिड कैप स्मॉल कैप, पर मुझे लगता है कि जो बड़े कंपनियां हैं वहां से हेडलाइंस जो हैं वो ठीक ठाक अच्छी खासी हैं। और आज अगर आप बढ़त देखें ज्यादातर जितनी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और ये बहुत ही क्रेडिटेबल है क्योंकि दूसरे आप पाएंगे तो हमारी जो मार्केट है वो काफी ऊपर है। ऑफ कोर्स कई जो संस्थान है जैसे मॉर्गन MSCI हैं उन लोगों का मानना है कि हमारे जो वैल्यूएशन अब रिच होते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये बेलगाम बेखट के आगे बढ़ती चली जाएगी, कंसोलिडेशन की पीरियड्स भी आएंगे। और आज जैसा कि आप पाएंगे कि अगले 3 दिन में US अमेरिका से काफी सारे आंकड़े आने वाले हैं, चाहे वो GDP के आंकड़े हों, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। आज कल जेरोम पावेल फेड चेयरमैन उनका एक वक्तव्य की उम्मीद की जा रही है और इससे जो है अमेरिकी बाजार और उसके साथ विश्व के जो स्टॉक मार्केट शेयर बाजार है उससे वो सिग्नल लेंगे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व US फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स जो ब्याज दर में बढ़ोतरी जिसके वजह से पहले तो उन्होंने जो कैश इन्फ्यूज किया उसकी वजह से मार्केट बढ़े, उसके बाद जो करेक्शन और प्रेशर्स में आए ग्लोबल मार्केट्स उसका क्या अगला पड़ाव होगा, क्या दिशा होगी उसको वो भापने की कोशिश करेंगे। तो अगले 3 दिन जो है वो आप पाएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका रिजल्ट शायद देखते देखते इम्पैक्ट देखते देखते आपको सोमवार तक दिखेगा। But then today the broader market underperformed the Sensex. What could be the reason behind it? 0.4% for the mid cap and small cap index shed 0.3%. I would say that it could be one of those positional things. One has to obviously go deeper into it, but I would say that maybe the larger the big boys are looking much more exciting at the moment, and people want to take positions out there. There are good headlines coming in. If you look at the FMCG, they seem to have done well. Now some of the experts are arguing that the whole inflation pressure that was putting a lot of pressure on the financials, that pressure seems to be has not increased. Maybe it's coming down a little bit, moderating a little bit. So that is one argument, at least for these companies, that their things are going okay. The other thing, Rajesh, is also every time your financials, banking and financials carry a lot of weight in our indices. So when they start doing well or you get okay sort of information coming from them, then also things go okay. But I would say largely the focus, I detect that the interest has been on the larger sort of stocks and large cap stocks, and which probably is getting reflected by your headlines. Okay, and also today continued FPI buying in India boosted the indices quite a bit. So you think going forward this will continue, the trend will continue? As my question related to this is that the resilience of Indian economy is coming across. You're absolutely right, Rajesh. And if you see some of the statements that are coming out of large institutional investors, now they're saying that continental size economy, which are large sort of economies, where domestic consumption sort of drives, where domestic consumption can drive the economy, which is our case. And they're taking the name of Indonesia as well. Now, these are the stories that
institutional investors are finding it attractive. Let's not forget Europe, which is one of the three major engines of global economy. It's not doing well at all, and things are looking pretty bleak because of the energy sort of situation. So imagine yourself to be a global fund manager. If you have money to invest and you don't want to invest in Europe, you would obviously look at alternatives. And right now they are not killed for choice. They have certain alternatives, but we seem to be there on the radar. जी, यहाँ एफपीआई की भी बात हुई और आपने जिक्र भी किया फेडरल बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल के आने वाले बयान का भी, स्टेटमेंट का भी, जो आने वाला है 2-3 दिनों में। तो अगर अमेरिका में फिर से ब्याज दरें बढ़ती हैं, ऐसे में एफपीआई का रुख क्या होगा? देखिए, वो तो इट्स अ फ्लिप ऑफ द कॉइन, बट ये आप यहाँ पे मेरी जगह कोई और होता, वो कुछ और कहेगा और तीसरा बंदा कुछ और कहेगा। तो सच्चाई तो ये है कि सबसे बड़ा एक्सपर्ट भी इसको एक्यूरेसी के साथ बोल नहीं सकता, और मैं तो कम से कम ईमानदारी के साथ आपके सामने कन्फेस कर रहा हूं। तो नंबर 1 तो ये है कि क्योंकि पीछे का कोई टेम्पलेट नहीं है जिसके बेसिस पे या कोई लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स या फाइनेंस है करंट सिचुएशन को आप एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये तो मान के चल ही सकते हैं कि जो रेट हाइक्स की जो क्वांटम है, जैसे 75 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, अब अगर आप हमसे अभी पूछा जाए कि क्या आपको लगता है कि अगले 2 बार, जो एक दिसंबर में और फरवरी में फेडरल रिजर्व जब अनाउंसमेंट करेगी, क्या 75 बेसिस पॉइंट आज की डेट में आपको लगता है? आप ये पाएंगे ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि एक इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में एक मॉडरेशन सा आ रहा है। तो जब आप इसको देख रहे हैं तब अगला सवाल ये उठता है कि अगर हमें लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट जो कि उम्मीद की जा रही है 15 दिसंबर में होगी, तो अगर आप वहां पे एक मॉडरेटिंग, जहां पे आपको लगता है कि बुरी खबरें बहुत ज्यादा आएंगी, मतलब यू थिंक दैट द वर्स्ट इज बिहाइंड यू, मतलब दानव जो है पीछे रह गए, अगर ऐसा है तो फिर एक ऑप्टिमिज्म इस लिहाज से आ जाता है। दूसरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली क्या होता है, हम रिसेशन आर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, पर अमेरिका में चैलेंज ये है कि लोग जो हैं वो उनके पास लेबर शॉर्टेज है। तो नॉर्मली रिसेशन का जो इंडिकेटर वो ये होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पर अगर आप उसको अपने लेबर फोर्स को छोड़ेंगे तो आपका आउटपुट बहुत जबरदस्त गिर जाएगा। तो ये इसीलिए लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है, फ्लैट रहता है, कल कुछ सुर्खियां रही कि S&P के जो कंपनीज हैं उनके जो सेल्स ग्रोथ है वो फ्लैट रहेंगी अगले साल। पर अगर ऐसा भी रहता है तो आप ये पाएंगे, ऐसा लग रहा है अभी, कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है अमेरिका में उतनी नहीं होगी। इसका मतलब इकोनॉमिक जो रिसेशन है उसकी उम्मीद, शैलो रिसेशन की उम्मीद की जा सकती है। कई लोग दूसरा उल्टा भी बोल रहे हैं, पर जहां तक ये बात आप कह रहे थे, वापस आपके अगर एक लाइन में कहना है तो ब्याज दरें तो बढ़ेंगी, पर उस लेवल पे नहीं बढ़ने की उम्मीद हो रही है इस वक्त जिस लेवल में सन 22 में। अब देखिए 21 में नहीं हो रही थी, चालू हुई, फिर इतनी ज्यादा हुई। अब अगर कोई पूछे कि इतनी ही रहेगी तो हमारा जवाब क्या होगा? हमें तो यही कहेंगे ना कि इतनी नहीं होगी, क्योंकि फ्रंट एंडेड होना था और उसका जो असर है वो दिखना शुरू होने लग गया है। But then clearly we have run ahead compared to the rest of the world. The figures that we have already quoted quite a bit. So do you believe the PSUs or financials are going to be the sectors to look forward to, or will they be dominating going forward? Rajesh, let's work in an intuitive way. Okay, so if there's going to be economic growth, to fund it, you will need banking and financial service. Banking will go to the most credit-worthy people, whether it's your trade finance, shorter end inventory financing, etc., supply chain financing, or slightly higher tenure sort of credit on this side. So, and even retail side. So, if the economy has got to grow, somebody has got to help it, as they say, lubricate the system, take things forward. Now, who does that? The banking does it. So, if you are assuming that there is going to be economic growth,
banking obviously it's a logical corollary that it will do well, and NBFCs, the non-banking guys, they'll do well. They'll service the people who are not as creditworthy the way it has been in the past. A quick comment from you on the rupee, which ended slightly weaker against the dollar today. It closed at 81.72 per dollar. What's your take on the position of rupee? Well, my take is full of bias, and I would like to believe one of the reports of a large foreign institutional player is that by March it will be 79.5, simply because of the way we are operating. If we don't get the oil prices are still under check, if things are not too bad on the trade front, as in our exports, I think we should be doing better. We should be able to go below the 80. Going too much of appreciation will not help us. जी, रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो आज एशियाई शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि चीन में जीरो कोविड नीति को लेकर उपजा असंतोष अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आज 2.3% बढ़त में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 5.2% का उछाल आया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों 1% लाभ में रहे, लेकिन जापान का निकेई 0.5% के नुकसान के साथ बंद हुआ। इस बीच नोमुरा के विश्लेषकों का मानना है कि चीन में लॉकडाउन के कारण सकल घरेलू उत्पाद पर असर पड़ा है। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.6% लाभ में चल रहा था। फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का डेक्स मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। On the Wall Street, key indices ended lower yesterday as U.S. oil futures reserved courses to settle higher after starting the day mired in worries that China's strict COVID-19 restrictions would stunt global economic growth. During the day, the U.S. Treasury yields turned lower after a surge in COVID cases in China and clashes between police and protesters across several major Chinese cities. So the Dow Jones Industrial Average declined 498 points or 1.5% to close at 33,849. The S&P 500 slipped 62 points or 1.5% to end at 3,964, and the Nasdaq Composite dropped 177 points or 1.6% to 11,050. Meanwhile, the New York Federal Reserve President John Williams declined to say how far and fast he believes the central bank will need to hike rates in coming months, but he added that it could be 2024 before rates are out. Now then, 2024, 2023 will continue to be, what should I say, volatile for the rest of the world? Well, most of the bad news, Rajesh, does get priced in. The market at the moment has figured out, it's working on an assumption that rate hikes will go till a certain point. Now, the critical part, the critical part is that the pundits, and I'm talking in the West, they think that most of this rate hike cycle will start slackening somewhere around March of 2023. Now, if things look, the steep sort of rate hikes still look likely getting into it, then things do become volatile, because right now people are assuming that things will start showing up and you wouldn't actually need this hard bitter medicine. But if things don't respond, inflationary expectations don't come down, you don't see other little cooling down of prices, then there will be a challenge. But problem, Rajesh, is the final sentence would be this, that this problem, this rate hike, was never because of demand, it was because of supply. So till you fix the supply, how will this problem go away? It's a monster that will just not go away. One more monstrous quote has come from Christine Lagarde, and she says a series of interest rate hikes ahead could be higher than the current expectations. That's not going to happen in India. At least if you look at what's being expected, we don't expect RBI to be hawkish. They'll probably
pause a little while because things are not out of control here. US, it's beginning to show some results. You're going to seeing some impact on the retail side as well. Although they're doing well, some of the sales are happening, but the financial results are showing impact of those rate hikes are happening. So in Europe, yes. And that's not good news at all because, as I mentioned, it's a very large engine. US, Europe, China, they drive the global economy. Our exports go to these markets. If we can't really do well if they also don't do well because we're plugged into the global system. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 1 दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। पहले चरण में इसकी शुरुआत 4 शहरों में भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से की जाएगी। बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सहित 4 और बैंक इसमें शामिल किए जाएंगे। प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपए की शुरुआत मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शहरों से की जाएगी। बाद में इसका विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक किया जाएगा। आवश्यक होने पर इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। The pilot would cover select locations in closed user group comprising participating customers and merchants. The digital rupee would be in the form of a digital token that represents legal tender. Users will be able to transact with digital rupee through a digital wallet offered by the participating banks and stored on mobile phones. Transactions can be both person to person and person to merchant. Payments to merchants can be made using QR codes displayed at merchant locations. The digital rupee would offer features of physical cash like trust, safety and settlement finality. As in the case of cash, it will not earn any interest and can be converted to other forms of money like deposits with banks. The pilot will test the robustness of the entire process of digital rupee creation, distribution and retail usage in real time. Different features and applications of the digital rupee token and architecture will be tested in future pilots based on the learnings from this pilot. Would you like to, in simplified term, tell our listeners quickly and briefly as to what is all this about, this digital rupee? So instead of carrying a wad of notes in your wallet, you do abracadabra and swish and it's gone. It's basically moves into your mobile phone, your smartphone. If you want to pay like you do right now through your mobile phone, you'll be able to do it. The only point is RBI, you will be linked with RBI, and right now you're linked with a bank and a wallet which is of the bank or some other company, and you store it there and you pay. Here what's happening is in this you're directly linked with the RBI, and the banks are providing the service, and this is an architecture which already exists for some investments and some other areas. So it's going to be another alternative where you don't have to come out with physical cash. But Rajesh, a couple of points. Still, people who want to have been using cash and not digital wallets, is there any compelling advantage for them to convert? Then Rajesh, the other part is the interoperability between various systems. So if you want cash and there's a credit card and there's another wallet, how well it is going to get integrated from one to the other within the country and outside? Because remember, billions of dollars come to us from abroad, from our relatives, friends and family members who are working. So all this will have to get integrated. For a layperson, how different is it from a banking app, for example? Not much, I would say. You're using it
whatever you need. A banking app will make you do, or a wallet will help you do anything. Receive payments or make payments. This is exactly going to do the same. The only thing is that there's a cash substitute that's coming in, and you're not, your wallet is going to be much lighter, but you're not going to be poorer. But as you said, no interest and nothing. बहुत संक्षेप में वित्तीय व्यवस्था जो देश की है उसको कितना लाभ मिलेगा इसका डिजिटल रुपए का क्या लाभ मिलने जा रहा है? सबसे पहले तो आप अगर देखें तो उसमें जो कैश की जो जरूरत पड़ती है, जो खुदरा पैसे हैं लेके लीजिए, काउंट कीजिए, वो कीजिए, तो ये एक और जरिया आपके पास आ गया है जहां पे आपको वो कैश जैसे ही आप फिजिकल एलिमेंट लाते हैं तो उसमें वक्त लगता है, रिकॉर्डें रखनी पड़ती हैं, डबल चेक करना पड़ता है ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है. जब ये सीधे आरबीआई से आपके पास आ रहा है, आप किसी और को दे रहे हैं, तो ये जो है ये जब डिजिटल में जा रहा है, एक तो वो फटाफट हो रहा है, इंस्टेंटेनियसली हो रहा है, ट्रैक किया जा सकता है, और जो टाइम इतना सारा बर्बाद होता है बैंकिंग सिस्टम का, फाइनेंशियल सिस्टम का, ट्रांजैक्शंस को की उसकी वैधता जो है, लीगैलिटी को एस्टैब्लिश करने में, आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने में, कि आप अगर बैंक से कैश निकाल रहे हैं कि आप वही हैं जो अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, और क्या आप इंटाइटल्ड हैं कैश निकालने के लिए. ये जो हम जितने चीजें भरते हैं करते हैं, आइडेंटिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी पे इतना सारा जो टाइम बर्बाद होता है वो सेव हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपका फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा. बात करते हैं अगली खबर की. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की उन्नति का सीधा संबंध देश की प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति से है. वे नई दिल्ली में 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. विदेश मंत्रालय ने इसका आयोजन कार्नेगी इंडिया के साथ मिलकर किया है. इस वर्ष का विषय है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी. विदेश मंत्री ने कहा कि ये विषय समय के अनुरूप है क्योंकि आज प्रौद्योगिकी भू राजनीति के केंद्र में है. उन्होंने कहा कि देशों ने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लिए हैं. विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आज के दौर में डाटा नया ईंधन है और प्रौद्योगिकी में सशक्त राजनीतिक अर्थ अंतर्निहित है. विदेश मंत्री का ये कहना, उद्यन जी, आज के दौर में डाटा नया ईंधन है, क्या मायने निकाले जाए? देखिए, ये कोट तो पुराना है, पर ये जो है इसकी जो रेलेवेंस है ये कई दशकों तक रहेगा. आप चिप्स देखिए, हम भारत क्यों चिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप डेटा को लोकलाइज जगह में स्टोर करने की क्यों बातचीत हो रही है? अगर आप बैटरीज में जो पदार्थ चाहिए उसमें सेल्फ सफिशिएंट क्यों होना चाहते हैं? सोलर पैनल्स में क्यों आप सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं? एनर्जी के ऊपर जो चैलेंज हुआ उसका क्या होगा? तो ये जो सारे जो सप्लाई चेन क्रिटिकल जो चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो चिप्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज जो हैं, उसके ऊपर जो चैलेंज है वो दिख गया है, और इसलिए इनका जो वक्तव्य है वो इतना इम्पोर्टेंट है. Moving on, the global crude oil prices jumped about 3% today on hopes of a relaxation of China's strict COVID-19 controls after rare protests in the Chinese cities over the weekend. So the Brent crude futures spurted $2.50 to trade at $85.69 a barrel. The US crude futures jumped $1.98 or 2.6% to $79.22 a barrel. कीमती धातुओं की बात करें तो कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 101 रुपए सस्ता होकर 52,837 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा. चांदी भी 353 रुपए टूटकर 61,744 रुपए प्रति किलोग्राम रही. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मंदी के साथ $1,753 प्रति औंस, जबकि चांदी $21.23 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. What's your take on the oil prices? Keeping in mind that we have winter coming up or onset of winter in Europe, US, etc. Much depends on the China situation, and of course they are talking about OPEC plus. They are talking about a further output cut, so it will be an interplay of these factors. Okay. Thank you so much for being with us and throwing light on various economic stories. Thank you, Rajesh. And before we close, the headlines once again. At the stock market, Sensex gains 177 points to close at a fresh all-time high. Nifty adds 55 points to a new record high. RBI announces the launch of the first pilot for the digital rupee on December 1.
And the rise of India is deeply linked with the rise of Indian technology, says External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra.